अंधी आंखों बहरे कानों को मेरा शोएब कुरैशी का सलाम विद से लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। सबसे पहले तो थोड़ी लोकल खबरें, बल्कि लोकल खबरों से पहले एक्चुअली ये ज़रा आप वीडियो देखें, आप उसको सुने। ये कोई मिडिल ईस्टर्न अरब स्कॉलर या somebody journalist or whatever, and he's making comments about Imran Khan and Umma. Very interesting. हमें तो अपने बंदे की कदर नहीं है, लेकिन बाहर वालों को हमारे इमरान खान की कदर है। देखिए, सुनिए जरा। When one part of the body hurts, we all hurt. How does the situation in Pakistan with Imran Khan have an impact on our Ummah and in Palestine in particular? I think that one of the greatest tragedies, in my opinion, that colonization inflicted on us was not just the physical aspect, but the mental aspect. What colonization did was it disconnected us as a body, it tore our limbs from each other, and our memories became disconnected from each other. When I read Ibn Kathir or Ibn Khaldun or Ibn Taymiyyah and their scripts, they talk about the politics of the Ummah from Morocco all the way to Jakarta and beyond. For them, it's just normal. We are one Ummah. It makes sense that someone from Tunisia knows about the affairs of Pakistan. It makes sense that the Pakistani talks about Saudi. It makes sense that the Saudi talks about Malaysia. One Ummah, one brotherhood where we all influence each other. When it comes to Imran Khan, let me be brutally honest. Imran Khan burst onto the scene. And when he gave his speech in the United Nations, he was a wonderfully eloquent advocate for the Muslim causes. In Azerbaijan, secular Azerbaijan, when they liberated Nagorno-Karabakh, Imran Khan's influence was so effective in going beyond the ethnic and nationalist lines that Azerbaijan, in their celebrations, they lifted 3 flags. Turkey, which gave them the drones, Azeri flag and Pakistani flag. When Imran Khan emerged onto the scene, there was a shift in the Muslim world that culminated in the Kuala Lumpur summit in 2019. The Saudi Crown Prince and the UAE were so terrified of the Kuala Lumpur summit because they believed if Imran Khan went and attended, Imran Khan would lend a Muslim legitimacy to this conference that was designed to rebuke the de-Islamization policies of UAE and Saudi Arabia, which were looking to introduce alcohol, looking to introduce OnlyFans model concerts, which were looking to introduce casinos into those areas. The Saudis, they threatened Imran Khan. They said, Wallahi, if you go to Kuala Lumpur, we will cut our investments to Pakistan and we will kick out the Pakistanis from Saudi Arabia and you can deal with it. Pakistan must be dependent on us. It cannot be equal to us. Imran Khan, the potential that he was about to bring in terms of establishing an independence. Remember, at every OIC meeting, Imran Khan would bring up 2 topics, Kashmir and Palestine. The reason that troubled Saudi and UAE so much, there are many people who think Imran Khan was just words. If he was just words, Saudi UAE would not have celebrated his toppling, nor would the US representative have said to the establishment in Pakistan, get rid of him and all will be forgiven. The Imran Khan's words were having such an impact, the way your words are having an impact on Biden, Blinken, and the shift in public opinion, that Imran Khan was bringing up Kashmir at a time in which Saudi and UAE were trying to get warmer ties with India. Remember, when Indian Prime Minister Modi's official insulted the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sayyidina Aisha radiallahu anha, Modi panicked so much that he issued an unprecedented statement. He said, "We respect all religions." His party had never made a statement like that in their entire history. They commissioned an article in Oman and other Arab capitals desperately trying to defend Modi and saying Modi had kicked out the official. Modi was worried that there would be a boycott and that the Muslim nations would punish India. Guess which country bailed Modi out and invited him to their capital to tell him, don't worry, this issue doesn't matter to us, ignore the Muslim anger. It was the United Arab Emirates, where bin Zayed received Modi and told him, Ta'ala, come, and they hugged him and they built a temple in UAE last week to show we're moving beyond Islam and Muslim causes, where now we want warmer ties, we don't really care about these issues. Imran Khan was making them sign on papers telling them that they respect Kashmir's right to independence at a time in which they didn't want to upset India, so they were getting annoyed. Imran Khan kept bringing up Palestine at the OIC and making Saudi and UAE sign
on a commitment to Palestinian liberation at a time in which UAE and Saudi were trying to get close to the Israelis. They told Imran Khan, listen, calm down, bro. I'm trying to get close to India and Israel. Why do you keep bringing up these issues? Why do you keep talking about it? The Saudis were getting them not to talk about it. We brought Iggy Azalea and Shakira and Mariah Carey to get them to forget about Palestine, Kashmir. Why are you bringing it up in the OIC? The UAE said we're building casinos and the like to make them forget about Palestine and Kashmir. Relax, why do you keep talking about it? Take a few million and shush. And Imran Khan said, I'm not gonna shush. Then Imran Khan made the greatest crime in Pakistan. He tried to appoint a chief of staff of the army and appoint an intelligence chief, which is the democratic right of any elected leader, but in Pakistan apparently it's haram. It's la yajuz. So they panicked and they kicked him out of power. When they kicked him out of power, you who believe yourselves to be ordinary, do you know why they couldn't arrest him? Because thousands of Pakistanis took to the streets. They tried to arrest him in Zaman Park, they couldn't do it. They tried to, they said, let's hold by-elections just to get rid of PTI. They did the by-elections. PTI won a landslide election in the largest province in Pakistan, in Punjab. Then they panicked and they said, Ya ilahi, what's going on over here? Then PTI, they tried to pull a nice move. They wanted to dissolve the assembly of Punjab to force general elections. The establishment said, whoa, 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 whoa. They said, we're not holding general elections. We're going to appoint a new assembly. And then they went to the Supreme Court. Supreme Court said, no, you have to hold elections. They said, toz for Supreme Court. We're not respecting this Supreme Court. The reason they couldn't arrest Imran Khan was because people were getting like Arab accounts were talking about Imran Khan. They were raising awareness saying, dude, what's happening to Imran Khan? He's being attacked only because he's suddenly raising the awareness. But ya ibadallah, let me tell you something phenomenal about these Pakistani brothers and why I believe the Ummah is alive. I refuse to believe the Ummah is weak. The establishment spent 2 years preparing to rig the elections to ensure that Imran Khan would be eliminated from the scene and PTI. They got him in prison, they arrested him because on May 9th, some installations were banned. Some Pakistanis, they got scared suddenly and they went home. I don't know why, but in any case, it is what it is. They arrested Imran Khan. They threw 250 charges. They found something about his marriage. Apparently the wife didn't wait for an iddah period or something. Something was so ridiculously disgusting that the way they did it. But in any case, they put him in prison and they tried to rig the elections. But this is the point I was making about social media. When I said earlier that they can shadow ban thousands of accounts, they can't shadow ban millions. They can't shadow ban millions of accounts. They can't shut down millions of voices. Because when they tried to rig the elections, what the Pakistanis did was they went and voted for independents who are from Imran Khan's party. And they came first. They started rigging in broad daylight. I went to bed and there was somebody leading with like 180,000 votes. I woke up the next morning, they reduced it to 90,000 votes. It was rigging in broad daylight. But they were so clumsy at rigging that even international media came out and said it's clearly a rigged election. The reason I give you this context is one, please read about what's happening in your ummah. Please learn about what's happening in your ummah. Please start to take an interest in the communities in your ummah. Please learn to talk about your ummah the way you talk about American football or basketball or the like. Please learn about your ummah and learn about it. But also, in my opinion, if Imran Khan was in power, I think there'd be a much louder voice for Palestine. I think if Imran Khan was in power, there would be a greater shift in the Muslim world that Erdogan would be encouraged to pursue as well. So would Malaysia and the like. I think that Imran Khan in those 3 years showed what the potential huge change can happen in the Muslim world. That's why I believe he was toppled. But more than anything else, it's not just about Imran Khan. What we're seeing in Pakistan is a revolution by the people to push back against an establishment, to say to them absolutely clear, Pakistan was not supposed to serve an establishment, it was supposed to serve the Pakistani people. And for those who say, Sami, but all this is just Pakistan, what does it have to do with me? Ibadallah, I'm proof of it. I'm an Arab. The reason I know so much of what's happening in Pakistan, including the fact they kidnapped a guy called Usman Dar for 20 days. And then he pops up after 20 days on TV and says, Imran Khan told me to go burn military installations. So like clumsy the way they did it. Why does an Arab know this? Because Imran Khan's message resonated. Why does an Arab know this? Because Imran Khan made Pakistan relevant to us. Imran Khan showed us a vision where Pakistan is a key part of the Ummah. And I, as a Muslim who resonates with the Ummah, I said, you know what actually, Sumaya, do you think it's worth going to Hanza Valley? Why don't we go visit Islamabad and Karachi? Why don't we go put our money in Pakistan? Imran Khan sounds like he's got some good ideas like to bring the Muslims together. Let's go and support him. We won't go to, Switzerland or the like.
Let's go and see what Pakistan is like. He was shifting the way that we thought about Pakistan, shifting the way that we thought about the Ummah. And that's why, ya ibadallah, let no one ever tell you that words don't matter. Let no one ever tell you that symbolism doesn't matter. Let no one ever tell you that words doesn't matter, because it does, because it affects change and it causes a shift that results in a series of consequences that results in new opportunities. Pakistan now is in a battle. They are desperately trying to make sure that Imran Khan doesn't form a government. They tried to get the two parties who were the beneficiaries of the rigging to form an alliance. There are people who won because of rigging, who have resigned their positions openly saying, I won because of rigging, I don't want to take my position like that. Pakistan is in chaos. If you want to do something for Pakistan, go and tweet about it, go and talk about it, go and raise awareness about it, go and lend your voice to them. For wallahi, your voice is what upsets the establishment, because they've been humiliated so much so that the US, which was happy to see Imran Khan topple, has issued a statement saying that it's expressing concern about what's happening in Pakistan. They're not actually concerned. They are rather trying to leave a way open in case Imran Khan comes back to power. There's a chance that he might. But the Ummah needs to rally. The same way that you saw you can make a difference on Gaza, you can make a difference on any issue related to the Ummah. Learn about Sudan. Learn about Pakistan. Go and learn it. You learn about so many other things. What's stopping you from going to learn and teaching your kids that these things matter? For wallahi, these borders are artificial. The Ummah is one. And the proof is that Allah, in the history of Islam, the liberation of Al-Quds was done by Umar al-Khattab, the Arab, and by Salah ad-Din, the Kurd, and Constantinople fell to the Turk. And we have the most profound scholars in our history like Baba Ahmed from the West African kingdoms. And we have some of the greatest poets and scholars from modern day Pakistan and India. And we have the Mughals, and we have those from Malaysia and India. Every single ethnicity contributed to Islam, because for them Islam was not ethnocentric. Islam was beyond that. Islam was anybody who said, I'm a Muslim. That's why our armies were composed of people from everywhere. Ibadallah, when did the Ummah start believing these borders that were made? Let's look beyond it. Let's learn about it. Because wallahi, in my opinion, if the Pakistanis win in Pakistan, there will be a domino effect on the rest of the Muslim world, inshallah. Takbir. Takbir. Interesting, right? Very interesting. 2 मिनट का नाम लोग. अब बात कर लें ज़रा थोड़ी लोकल. पिछले तकरीबन 4-5 दिन पहले तकरीबन 33 सेनेटर्स ने पाकिस्तान के इमरान खान के हक़ में ख़त लिख के बाइडन को भेजा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, इसकी वोट इलेक्शन की, और जिन लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ उनको छुड़ाएं. बाइडन के पास गया है ख़त. आई एम नॉट श्योर कि इसका कितना अफेक्ट करेगा, but at least there's something is better than nothing. So let's hope things get better. Maybe इतना अफेक्ट अभी ना करे, लेकिन maybe they stir up things in near future. बाकी सेनेटर भी शायद उसी पे आ जाए. But let's see what happens. But so far, that's the biggest thing that they have done. 33 senators have written a letter to Biden. Another, which is more important one, which I've been saying from the beginning, again, I'm going to say, oh, I told you so. Trump is coming back. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को बिल्कुल कह दिया है कि बस कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसने इस पर बैन लगाया था, तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब फेडरल कोर्ट है, तो उसने डिसीजन दिया है. 10 के 10 बेंच में 10 जजेस बैठे थे, तो इनॉनिमस डिसीजन है. 10 जजों ने कहा है कि कोलोराडो को या किसी और स्टेट को हक पहुँचता कि वो ट्रम्प को बैन करें. बैन और कोई बैन कर सकता है ट्रम्प को, तो वो अवाम है या फिर कांग्रेस है. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ट्रम्प. Maybe good news a little bit for Imran Khan, but not good news for Biden. Not good news for Biden. But again, he needs to go. He needs to go. And we have nobody else who can replace him in the Democratic Party. कहता ना यार, वो अपना पुराना ही लंगोटिया चोर, क्या बोले से कुछ है ना, बेहतर था कफन चोर, पुराना कफन चोर ही बेहतर. But that's how it is. एक और ख़बर, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई आई गेस, कि एक्स सर्विसमैन जो हैं पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और मिलिट्री के, वो डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन
फ्रॉम आर्मी चीफ से और एयर चीफ से, पर उनके डिमांड करने से क्या उनको रेजिग्नेशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो नहीं, बट एटलीस्ट दे मेकिंग एन एफर्ट, बट दे शुड मेड एफर्ट लॉन्ग टाइम अगो। जब शुरू में जब उठे था उसी वक्त वोट देना चाहिए था, तो दबा दिया बाजवा साहब ने, मुनीर साहब ने, बैठ गए आराम से चुपचाप, समझ नहीं आ रहा। एनीवे दूसरी तरफ मौलाना डीजल जो है उनकी सीट ऐसी हुई भी है, सारी सीटें हार चुके हैं। अब वो खिसियानी बिल्ली उनके साथ भी हाथ हुआ, सही का हाथ हुआ इनके साथ, मौलाना के साथ। उसको पता नहीं क्या क्या उसको बोल बच्चन दिए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और साइड में से, बल्कि मौलाना साहब के साथ तो हाथ हुआ है नवाज शरीफ के साथ ही बड़ा हाथ हो गया। आया भागा आया कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, चौथी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा। एंड लेकिन उसकी भाई की ऑलरेडी डील चली थी इनके साथ, ठीक है भाई को ले आओ, एंड देन बट यू कैन प्रेजेंट बिकॉज नोबडी लाइक्स नवाज शरीफ इन आर्मी रैंक, एंड नोबडी लाइक आर्मी इन आर्मी। नो, पीपल लव आर्मी, दे डोंट लाइक ये ऊपर जो जनरल्स जो बैठे हैं ना, हरामखोर और चोर और चक्के जो बैठे हैं, ट्रेडर, उनको आर्मी पसंद, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। आर्मी इज़ फॉर अस, वी लव आर्मी, बट नॉट दीस ऊपर जो बैठे हैं जनरल्स वगैरह, उनको तो बस अपने खाने पीने से मतलब है। पता है आपको 9 साल इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट के 9 साल बाद अपना जज मुनीर, उन्होंने नज़रिया ज़रूरत के तहत उन्होंने जो डिसीजन लिया था, और उस वक्त उन्हें कह भी दिया था कि पाकिस्तान जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान का जहाँ पे जो वायसराय जो बैठा हुआ है वहाँ का क्वीन का, उसके हुक्म से हर चीज़ चलती है। तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी, और जज कह रहा है, राइट, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है डू मना चाहिए। अगर आपको पता है ऐसा है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट, आप एडमिट कर रहे हैं भैया। जैसे अपना क्या नाम है, अपना आपके वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, beggar can be choosy. Yeah, obviously beggar can be choosy. But why can you become? How do you become a beggar? ये भी तो देखो ना आप। But यही हमारी पाकिस्तान, यार आई डोंट नो, कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बनाया वही रखेगा उसको, लेकिन जो हरकतें हैं पाकिस्तान की और एक चल रहा है तो लगता है ऐसे ही है कि उसको तो अल्लाह ताला रखेगा, वरना तो एक जो है सुनाता चलो, एक काफिर था जिसको खुदा भी यकीन नहीं था, उसने आके पाकिस्तान को विज़िट किया, पाकिस्तान की जो हालत देखी, उसने देखा मुल्क अभी तो चल रहा है, तो वापस आके वो खुदा भी यकीन हो गया उसका। कहने लगा पहले तो मैं खुदा भी यकीन नहीं रखता, लेकिन जिस तरह से मुल्क चल रहा ही है उसको खुदा ही चला सकता है, कोई और नहीं चला सकता। तो दैट्स काइंड ऑफ फनी बट शेमफुल। बट वोटिंग हो गई, अक़लियती की जो सीटें थीं और माइनॉरिटी सीटें थीं वो छिन गई। खुल्ला ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, अब तो उनको डर निकल गया है ना। पहले छुपके करते थे कि आगे इसको ले आते थे, अब उसको ले आता था, अब वो डर निकल गया इनका। कोई आदमी कोई भी चीज़ पहली दफ़ा करे ना, या कोई कत्ल करे कि चोरी करे, कि उसको डर होता है। वो डर किसका होता है? डर होता है अननोन का, कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब एक दफ़ा कत्ल कर चुका होता है और चोरी कर चुका होता है, ये कर चुका होता है, फिर उसको डर निकल जाता है, बोलता है यार क्या, मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ द पीपल डू इट। इसलिए पहली हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, दूसरी कम्स इजी, गोज़ इजी। तो अब पिछले दोनों, अब जब वोटिंग जो हुई है, उसको जो वोट जो मिले ना इमरान खान को मिले, लेकिन इमरान खान से ज़्यादा एंटी आर्मी होने की वजह से मिले। आर्मी पे जो गुस्सा है ना, इस्टेब्लिशमेंट जो गुस्सा है लोगों का, उसकी वजह से लोग निकल के आए। इमरान खान निकल के तो आए, लेकिन अगर आर्मी सही होती है तो इतना मसला नहीं होता। और आर्मी की वजह से ये लोग निकल के आए बाहर सड़कों पर। मैं तो कहता हूँ एहतियात जो सैटरडे के सैटरडे होता है उसको तो करें, लेकिन जिस तरह मैं बीन एडवाइजिंग, सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। कौन किधर जाएगा, किस तरह जाएगा, रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, अपने घरों से बाहर निकलें। और उस एहतियाज के टाइम पे अपने घरों से बाहर निकलें एंड जस्ट स्टे आउट देयर विद द प्ले कार्ड व्हाटएवर। और कुछ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चौराहे पे जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गेट आउट ऑफ योर डोर, फ्रंट डोर, वहाँ पे आप एहतियाज शुरू करें। आई थिंक दैट्स ईजीएस्ट वे एंड दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू डू इट। उससे ये कि एक चीज़ याद है एहतियात से, यार वो जो जिस बंदे ने इमरान खान को सपोजिबली गोली मारी थी, वो किधर गया वो? उसके बारे में ना मीडिया पे कोई खबर आ रही है, ना कुछ आ रहा है। उसको निकाल के पीछे से बाहर निकाल दिया साइड में, क्या किया उसके साथ? ऑब्वियसली ही वाज अ पपेट, ही वाज ऑन रियल किलर, ही वाज ऑन रियल शूटर, वो तो पपेट था। लेकिन
हम लोग की जो याददाश्त है ना बहुत ही कमज़ोर है, बहुत शॉर्ट टर्म है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि सब क्या हुआ, किधर गया वो बंदा, क्या हो रहा है, क्यों, किस जेल में है, अगर जेल में है भी या बाहर निकाल दिया है। बट नोबडी नोस। आई वुड लाइक टू नो कि ये है किधर। और ये जो बैरिस्टर साहब जो हैं अपना, आपके चेयरमैन साहब जो हैं पीटीआई वगैरह के, तो इनको तो उस पर एम्फेसाइज करना चाहिए, उस पर उनको कुछ करना चाहिए। दे हैव टू मेक सम काइंड ऑफ कंप्लेन और आई डोंट नो व्हाटएवर दिस दे नीड टू डू। ये वेयर इज ही, किधर है, कहाँ तक पहुँचा है केस, और पब्लिक को के सामने क्यों नहीं आ रहा है इसका। दे आर सपोज टू डू दैट। बट अगेन बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सो बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में तो व्हाटएवर हुंता जनता, जो भी, कोई इसको जनता बोलता है, कोई भी हुंता बोलता है। आर्मी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल वर्ड है हुंता एक्चुअली। तो जब तक इनका बस चलेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं सकता। अभी जाली 45 बना के ले आए, फॉर्म 45 बना के ले आए, और वो भी सही बना सकते हैं ना यार। अकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इन खबीसों के पास अकल है किधर, अकल है किधर। इनका सर पता किधर, इनका सर मोड़ के अपने अंदर डाला हुआ पीछे उन्होंने, इसलिए अकल नहीं है इनके पास। और सुना है कि मरीम नवाज़ ने जब से ये हलफ उठाया है तो उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स की बात की। एक प्रोजेक्ट्स की बात की है एयर एम्बुलेंस। इट्स अ जोक। पहले आप सड़क पे जो एम्बुलेंस चलती है उनको तो सुधार लो, उनको तो सीधा खल लो। फिर जब वो सही हो जाए तो फिर जाके आप एयर एम्बुलेंस में लेके आ जाना। जो आपकी हालत देखिए, जो एम्बुलेंसेस हैं, लगता है वो यहाँ पे जो गार्बेज ट्रक है ना, वो उससे ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, वो क्लीन है, जो आपकी पाकिस्तान में जो एम्बुलेंसेस हैं। हर एम्बुलेंस क्या, हर घर गाड़ी को और मिनी वैन को, उसको बस एक सीटें निकाल के एम्बुलेंस बना दिया। एम्बुलेंस का उनका मकसद पता नहीं होता क्या एम्बुलेंस सारी चीज़ें जो कि आपका प्रेसिडेंट जो या प्राइम मिनिस्टर जो चल रहा होता है उसके पीछे जो चल रही थी ना बड़ी सी एम्बुलेंस, वो है एक्चुअल एम्बुलेंस। तो मरीम नवाज़ को बोले हैं अपना एयर एम्बुलेंस से बाद में बनाइएगा, पहले सड़क वाली एम्बुलेंस है उनको सुधार लें, उनको लाइन पे ले आएँ, उनको सीधा कर लें। जब आपके पास वो काफ़ी हो जाए फिर जाके आप एयर एम्बुलेंस बनाइएगा। ये किडिंग मैन, सीरियसली ये किडिंग। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितनी अकल है उतनी ही बात करेंगे ना। ज़िंदगी भर कुछ काम तो किया है नहीं उन्होंने। घर में बैठ के बाप की रोटी खाइए। दोनों एंड बेटर बोन विद द गोल्डन स्पून इन द माउथ, सो दे डोंट नो एनी बेटर। ये और बिलावल दोनों, दे हैव नो क्लू कि दुनिया में क्या हो रहा है। बट हमारी जो कौम जो थी उनको तो डायनेस्टी चाहिए, क्या नवाज फैमिली और बजरदारी फैमिली। जैसे बैरिस्टर साहब ने उस दिन कहा नेशनल असेंबली पे भुट्टो को कि भुट्टो अपना जरदारी को कि अगर भुट्टो का नाम लगाने से आप भुट्टो नहीं बन जाते, समझे ना। सो दैट वाज अ बिग तमाचा ऑन हिज फेस। बेगैरती की इंतहा होती है। एक चीज़ समझ में आती है कि जी जजेस वगैरह जो कर रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हैं, ओपनली गलत डिसीजन ले रहे हैं, काजी फाजा हुआ या बाकी जो हो गए, इनकी फैमिलियाँ या इनके बच्चे इनसे नहीं पूछते हैं कि बाबा क्या कैसे डिसीजन ले लिया, ऐसे क्या किया, क्यों किया। या वो भी बाप की तरह बेगैरत और बेहिस और गद्दार है। आई डोंट बिलीव दैट होंगे। अगर नई जनरेशन है पढ़ी लिखी तो नहीं होंगे। लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे जैसा फैमिली आप बोन होते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे नवाज़ की जो फैमिली जो है, जरदारी की जो फैमिली जो पैदा हो रहे हैं अंदर, वही उन्हीं की तरह है। दे ऑल कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर। सो दैट्स इट। So let's see। और जो वो बैलेट पेपर जो निकल गए थे, वो अपना प्रिंटिंग प्रेस है पाकिस्तान में, जो नवाज शरीफ के लिए छप रहे थे, क्या हुआ उसका? अंडर द कारपेट। अब तो ये खबरें सुन के और देख के ताजुब होता नहीं है, बल्कि तो दिल तो ऐसा चाहता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिरा दे एक आदमी। Started from the scratch, started from the beginning. This is unbelievable. But that's what Pakistan has become, and I don't blame anybody। मैं जो अपने आप को, हम सब अपने आप को ब्लेम करता हूँ, मुझे भी और बाकी हम सब लोग जो हैं, कौम भी नहीं, हजूम को ब्लेम कर रहा हूँ। कौम होती तो भी ये हरकत नहीं होती, कौम होती तो आज़ाद होती, ये हजूम। साथ ही साथ अपना असद तूर को बेचारे को और इमरान रियाज को फिर पकड़ लिया, उठा के ले गए, तो पूछने वाला नहीं है। पर लेकिन एटलीस्ट पुलिस ने उठाया दफ़ा, वो भी जाली कैसे बना
इस अंधेर नगरी है यार, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी है, जिसका जो दिल चाहे, मतलब पावर में आप तो जिसको केस बनाना बना दो, जिसको उठाना उठा लो, जिसको गायब कराना करा दो, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और मुझे एक बात तो समझ नहीं आती, जब ये लोग जाने पहचाने लोग उठाते हैं, ऐसे इमरान रियाज हो गया, आसदपुर हो गया, इनके यहाँ सरों पे आप थैले क्यों डालते हैं? थैले का डाल मकसद क्या है? थैले का जो मकसद जो होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है तो उसको छुपाने के लिए, ताकि उसके साथी उसको साथी ना देख लेंगे यहाँ पर है और कहीं हमारी मुखबरी ना कर दे। लेकिन इमरान रियाज और असदपुर और बाकी जो अपने इतने पॉलिटिकल प्रिजनर जो उठाए, इनके सर पे या थैले डालने से क्या मकसद है? खाली मकसद आपका ये है कि आप उनकी बेइज्जती करना है, उनकी सेल्फ स्टीम को धचका लगाना है। दैट्स हाउ यू डू इट। ये सारे काम अपने I don't know, but अब वही बिल जाएगी। How we gonna fix this? Can we fix this? Is it fixable? Is Pakistan fixable? मेरे नज़दीक पाकिस्तान fixable खाली एक ही हो सकता है, bloody coup. But as a bloody coup, I don't mean bloody coup. I mean खूनी इनकलाब। इसके बगैर पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। आप लगे रहें, कोशिश करते रहें। We need to have a bloody coup, और जिसमें जब 5 से 10 हज़ार ऊपर के जो बंदे हैं ना, सारे उड़ा दें आप, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। That's the only way you can fix your beloved country. But that's I don't know who's gonna do it. We can talk about it, but it's very frustrated. और जैसे मैंने पहले पूछा था, बोला था कि कोई मुझे बताए यार, किस लॉ के तहत ये आर्मी वाले आई एस उठा के जा रहे हैं, किस लॉ के तहत? और उसको छोड़ो, ये पुलिस वाले जो आपको अरेस्ट करते हैं तो पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हमारे कानून में इजाज़त है इसकी कि आप अरेस्ट करें, ठीक है, बंदा अरेस्ट होने को तैयार है, आप उसकी पिटाई भी करें, उसको पीछे लाते मारते हैं, गुस्से मारते हैं। अलाउ किस तरह उनको, ये किस लॉ के तहत? अगेन देयर इज नो लॉ, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक, अनफॉर्चुनेटली। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, लॉ कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, जिसका जो दिल चाहे करे। जब तक आर्मी का आशीर्वाद है, पता ना, आर्मी आपको तकरीबन 42% आपका बजट का हिस्सा लेके जाती है, उसके बावजूद उसकी 85 डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं, हर चीज़ में आर्मी ने हाथ डाला हुआ है। आर्मी प्रॉब्ली रिचर देन पाकिस्तान, जो उनका है। बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एडवाइस किया, आई थिंक वी शुड प्रमोट, कि जिस तरह इज़राइल का प्रमोट हो रहा है कि इज़राइल से खजूरें आ रही हैं, सामान आ रहा है, आप नहीं खरीदें, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो चीज़ भी आर्मी की तरफ से बनती है, फर्टिलाइज़र हो या गैस हो या पेट्रोल हो, कुछ भी हो, बाइकआउट करें उसका, टोटल बाइकआउट। कोई भी आर्मी की चीज़ या आर्मी फाउंडेशन की चीज़ या फौजी फाउंडेशन की चीज़ ना खरीदें, टोटल बाइकआउट करें। इट माइट हर्ट देम, बिकॉज स्लोली, ट्रस्ट मी, जब ज़ारा के साथ जो यहाँ पे जो हुआ था, मैकडोनल्ड के साथ जो हुआ था, दे फेल्ट इट, वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर पूरा पाकिस्तानी इनका बाइकआउट कर देंगे चीज़ों का, इन प्रोडक्ट्स का, that would be a good start. Let's see if they can do it. We should start it. I'm start doing it, but I mean, I don't even get anything from Pakistan Army, but I'm going to talk to my family. I'm going to start doing that. पता है पिछले दिनों किसी जर्नलिस्ट ने IMF के ex-IMF जो का चीफ, उससे पूछा था पाकिस्तान की मदद के लिए, तो उसने बोला था क्या, इफ़ जरदारी comes into the picture of the government और नवाज शरीफ, वो फिर उनको अमदाद नहीं मिलेगी। लेकिन वो तो एक्स बॉस है ना IMF का, करंट बॉस जो है वो तो हमारे माँ बाप जी उनके कहने में चलेंगे कि देनी कि नहीं देनी, और अगर इनके काम हो रहे हैं तो दिलवाएंगे वो, लेकिन देनी नहीं चाहिए। अंटिल एज आई सेड, इमरान खान ने कहा कि लेटर जो भेजा उसको कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो कम से कम 30% हल्का होती, दे शुडंट बी giving any aid to Pakistan. But चक्कर यार, एक और चीज़ अंडरस्टैंड कि PTI जो है, देर पॉलिटिक्स में बच्चे हैं, इनके जो बाप जो हैं तीनों, जरदारी और नवाज वगैरह, दे आर वे अहेड ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स जो है ना, इमरान खान पॉलिटिक्स करना चाहता है, जो कि पाकिस्तान जो कि पॉलिटिक्स होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स नहीं होती। पाकिस्तान में गुंडागर्दी होती है, माफिया होते हैं, कनेक्शन होते हैं, किसी किधर जारदारी है वो होती है, और आपने इसकी टांग खींचनी, इसको मारना है, उसको उठाना है, जो कि इमरान खान he does not know, because that's not, that doesn't, ये इस तरह की चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी होती हैं।
बगैर आपके SHO के और बगैर आपके SP के और पुलिस के ये आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो गुंडागर्दी और माफिया से वो वगैरह सारा करने से होता है। सेकेंड थिंग जो PTI जो करी हर चीज़ लेट सोच के दे टू स्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने ये सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो उन्होंने किया था तो देख लेना चाहिए था कि भैया जो सुन्नी इत्तेहाद का एक ही बंदा है खुद, वो भी PTI पे लड़ा है, राइट। और उन्होंने सीटें वगैरह अपने एक्स्ट्रा जो सीटें उसके लिए कुछ फाइलिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। टेक्निकली मिलनी चाहिए, मिल सकती थी उनको सीटें, लेकिन इलेक्शन कमीशन हरा ही बना कर रहा है। सो इफ दे वांट डू इट, या PTI आर्मी को, इलेक्शन कमीशन को, नवाज एंड कंपनी को एक्सक्यूजेस बहुत दे रही है। इसके लिए एक्सक्यूज, ये क्यों किया, ये किस तरह नहीं किया, व्हाई कैन दे डू थिंग्स राइट। और हर चीज़ स्लो। अभी जाके थोड़ा बहुत उन्होंने एहतजाज वगैरह शुरू किया ना, बैठे हुए हैं कुछ पंजाब का उन्होंने कुछ शोर ही नहीं मचाया, क्या हुआ पंजाब में, उठा के लेके भाग गए, नथिंग हैपनिंग। अब उन्होंने जो सब नेशनल असेंबली जो हुई है उसमें उन्होंने थोड़ा शोर मचाना शुरू किया, बल्कि तो शोर उनको इतना मचाना चाहिए कि किसी एक लीडरशिप को, उनकी जो गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है उसको एक लफ्ज़ बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। दैट्स व्हाट दे शुड डू। ठीक है, आपको तो वोट लेके तो नहीं है वो आए आप असेंबलीज में, आप तो बदमाशी से आए, एंड यू हैव नो राइट। एंड अली अमीन गंडापुर ने सही कहा कि भैया मैं उसके हलफ बर्दार में क्यों जाऊँ जो वो लेजिटिमेट ही नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट PTI नीड्स टू मूव अप द गेम, दे नीड टू थोड़ा आगे उनको, दे नीड टू डू थिंग्स क्विक एंड सोना नहीं इनको, दे नीड टू स्टे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। बल्कि इनको ये जो अपना आर्मी और ISI और इलेक्शन कमीशन जो है, दे आर 1 स्टेप अहेड और 2 स्टेप अहेड ऑफ PTI। PTI को इनसे 2-3 स्टेप आगे होना चाहिए। PTI पीछे भागती फिर रही है। It's not gonna work. As I said, the only way we can fix this country, bloody coup. That's what it is. वो चट्टा साहब का क्या हुआ, किधर भाग गए? ये बड़े निकल के आए थे कि मेरे ज़मीर की आवाज़ आई, मैं खुदकशी करने लगा था, वहाँ पता नहीं क्या एपिसोड निकाला, वो वाज द रीज़न फॉर दैट एपिसोड। और गायब है चट्टा साहब अभी, बट एज आई सेड, अब का वो भी गड़ा है। जाते जाते इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं चाहता हूँ आपको दिया करूँ हर प्रोग्राम में। जब अलेक्जेंडर मर रहा था, ही वाज ऑन डेड बेड, तो उसने अपने सारे जनरलों को बुलाया और उनसे 3 चीज़ें की। एक तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो इलाज से पहले नहीं, जब मर जाऊं तो मेरा कॉफन जो उठाते हैं ना जनाजे को, मेरे बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे जनाजे को उठा के उठाएँ। दूसरा उसने बोला कि जब मैं जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे सारी दौलत है ना लुटा दो लोगों पे, फेंक देना बाहर। तीसरा लगा जब मुझे बैरी करने लगो कॉफन में तो मेरा एक हाथ खाली बाहर रखना, बाकी जिस्म के अंदर मेरा हाथ बाहर निकाल लेना। तो जनरल ने पूछा कि ये क्यों? तो उसने बोला कि ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कॉफन पे जो डॉक्टर्स उठाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास बेहतरीन डॉक्टर्स होने के बावजूद भी आपको पास मौत का क्यों नहीं है। पीपल अंडरस्टैंड दैट। दूसरा, मैं पैसा अपना सारा सड़कों पे इसलिए फेंक के जाना चाहता हूँ कि लोग देखें मैं कितना अमीर था, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ गया, कुछ साथ नहीं लिया। आखिर मेरा हाथ बाहर रखना ताकि लोगों को देखें कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। Interesting, right? If people can understand that. That is enough time for today. Good evening, good night, good afternoon, good morning, जहाँ किधर भी हैं आप। मैं हूँ शोएब कुरैशी with Say It Like It Is from New York. God Hafiz.